Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arafat mujeeb from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number first. Chapter is about microorganisms, friends and foe. And in this chapter today my topics are to discuss concept of virus एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. आज हमारी ये टॉपिक्स रहेंगे. इट इज 8th standard science and this is my last lecture of this chapter. Then we can take the next chapter of the units first syllabus. Then हम कॉन्सेप्ट वायरस को पढ़ेंगे यहाँ कि वायरस क्या होते हैं. वायरस, हाँ, तो वायरस जो है ये लैटिन नेम से डिराइव हुआ है. लैटिन नेम से डिराइव्ड बाय लैटिन नेम दैट इज द वीनोम. वीनोम, हाँ, वीनोम को कहा जाता, इट इज अ पॉइजन. देन इट इज अ पॉइजन विच इज इन द फ्लूइड इन स्टेट. फ्लूइड इन स्टेट, that means a fluidous material named as poison, venom. और venom ये लैटिन नेम है. वायरस, वायरस से ही if we go to the it is Latin name that this virus derived by the word venom. Venom is the poison. It is in fluid in state, fluidous, liquid in state, or almost. You know that when anybody take a poison, then there is definitely the kill. Then there is definitely the death of that organism. तो वायरस इस नाम से, इस लैटिन नेम से डेराइव हुआ है. Then we can say that if the range of size of virus, जो viruses है उनकी क्या generally range of size रहता है. If we talk about the range of size in virus, range of size in viruses, generally we can take 0.015 micrometer से लेके 0.2 micrometer. Their range of size is from 0.015 micrometer to 0.2 micrometer. ये इनका size range रहता. That means these are highly microscopic in size. Highly microscopic in size. These viruses are hence highly microscopic in size, as the range of measuring the size is from this value to this value. They are microscopic than the bacteria. Then we can say the viruses can also pass the filter material. If the bacteria can't, but viruses can pass through the filter material. Then so because of their highly microscopic in size, therefore they need highly power microscope. They need high power microscope. High power microscope. इनको ऑब्जर्व करने के लिए टेक्निकली वी शुड बी स्ट्रॉन्ग. वी शुड हैव हाई पावर माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज देम, which is so microscopic in size as the size ranges of this. And this is the 2 points I discussed it here. Now जो वायरस है बात करेंगे. वायरस जो है they have a threshold life. They hold their life between non-living organisms, non-living and living organisms. That means when a part में कहूंगा
when they are outside of the body of host, outside body of host, at that time they are the non-living in state. And if they are inside body of host, then they are living in state. यही मैंने कहा इस पॉइंट में, the threshold of their life, they hold their life between the non-living state and living state. दोनों स्टेट, लिविंग स्टेट और नॉन लिविंग स्टेट के दरमियान they hold up their life. When they are found outside of their body, they are just like the particle, non-living in condition. When they are found their way inside the body of the host, then they are living in state. तो दोनों इसके पास दोनों रास्ते हैं. Viruses, therefore viruses are not placed under the groups of microorganisms. इनको हम अलग से कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं. तो because they hold their threshold lie between the non-living and living state. Then outside of the body of host they are non-living, and inside the body of the host can be animal, host can be plant, host can be himself human beings. Then inside the body of plants, animals and humans, they are living in state, and they start to begin the living organism's life. It is there. If we talk about the virus here, then structure of virus, if we अगर ध्यान दिया जाएगा इस पे, structure of virus, structure of virus. तो वायरस जो है, it contained a nucleocapsid material and enclosed by a layer, that is the envelope. That envelope is made up of the lipoproteins. That envelope, वो इस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेंगे. वायरस का स्ट्रक्चर, it is made of nucleocapsid material, and second, it is covered by an envelope which is made up of lipoproteins, and there is another on the surface of the envelope surface, they have glycoproteins. तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात हम कर देंगे, जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, न्यूक्लियोकैप्सिड is divided into here. It contains the viral genome. Yes, viral genome, that means genetic material. इधर या तो RNA इनमें पाया जाता है या इनका जेनेटिक मटेरियल DNA पाया जाता है. और capsid protein layer, that this genome, this genetic material is covering by a protein layer, that is known as the capsid. That is the capsid. Collectively the viral genome, which can be RNA or DNA, genetic material plus capsid, it is a layer of proteins. कैप्सिड खुद बना होता है कैप्सोमेयर्स. तो ये खुद बना होता है कैप्सोमेयर्स, कैप्सिड. तो इस चीज को हम collectively this is known as the nucleocapsid material, or then externally it is covered by envelope made up of the lipid molecules, fat molecules and plus proteins. And they have the projections, we can say spikes on the surface of the envelope, that these are embedded, they are made up of the glycoproteins. जरा डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको.
डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस ध्यान दीजिए। तो वायरस जो है यहाँ ये this can be RNA या DNA. It is a linear chain of helix in form, twisted in form, या RNA हो सकता है ये वायरल जेनेटिक मटेरियल RNA का या तो DNA का। तो then this RNA genetic material is covered by a layer. It is covered by a layer which is known as the protein layer से बना हुआ होता है capsid. Now we can say this is the twisted material which is known as the RNA material, and it is covered by a capsid. Capsid layer. Capsid is made of protein. This capsid, CAPSID, capsid. Capsid is itself made up of layer of capsomeres. That means it is itself made up of the capsomeres. This layer is made up of capsomeres. देखिए capsomeres. That means it is itself made up of the capsomere. असल में जो capsid है, the protein layer. Capsid is of protein layer. It protects the genetic material, that is the RNA, and made up of the particles, number of particles known as the capsomeres. And externally, this virus is covered by an envelope. ये मैंने बताया अभी आपको स्ट्रक्चर में. It is covered by an envelope. Here it is an envelope. It is here envelope, virus envelope, and this envelope is made up of shabash. It is made up of the lipoproteins. It gives externally protection to the virus and contains some important receptors which recognize the host cell. And on the surface they have the spikes. Here they have the spikes on the surface. They are made up of glycoproteins. असल में यही होस्ट के सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं इनके पास. तो ग्लाइकोप्रोटीन्स यही चकमा दे देते हैं एनिमल के बॉडी सेल्स को. उनको लगता है ये अपना ही बंदा है, अपना ही पार्टिकल है, अपना ही सेल का कंपोनेंट या अपना ही सेल है. बिकॉज ऑफ दिस लेयर ऑफ these glycoproteins are embedded in an envelope. ये देखिए अगर ये मैं envelope बनाऊंगा, this is the envelope of glyco, this is the envelope of this is envelope of, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, this is envelope of lipoproteins, and this envelope of lipoproteins में ही embedded है क्या, there is embedded of these glycoproteins. These are the, I can say here, this is the this ये जो which are embedded in the layer glycoprotein, carbohydrates के glycoprotein. This is the structure of the virus. In this way you can say the important things in the virus, that they have the genetic material RNA or DNA का भी हो सकता है, and it is protected outer by a capsid layer which is made up of protein molecules. And third, there is another layer, this third envelope externally they are this layer ये जो मैंने बनाया यहाँ पे black color का layer, the envelope that is made up of the lipoproteins, and within the lipoprotein there are embedded of glycoproteins. This is the structure, general structure of the virus here. यहाँ देखिए वायरस के बारे में और बताना चाहता हूँ.
जो मैंने कहा अभी जो वायरस है, वायरस किस कदर जो है ये नॉन लिविंग स्टेट होता है, नॉन लिविंग स्टेट में, क्योंकि कहा जाता है एज द स्टोन पार्टिकल इट लाइक आउटसाइड इन द सराउंडिंग इन द एनवायरमेंट outside of the body of the host, it just like the stone piece, dust particle which is neutralized, and in ये देखा गया they are in crystalline in form, crystalline in form इसका अंदर ये नॉन लिविंग स्टेट में होते हैं, और इनके अंदर सेल के अंदर नहीं पाया जाता है साइटोप्लाज्म अपना न या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, या सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है. दे हैव द एब्सेंट. क्या मैंने कहा, इनके अंदर हम कैसे कहेंगे जो वायरस है दे आर नॉन लिविंग इन स्टेट, दैट मीन्स दे आर आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट, दे जस्ट लाइक द डस्ट पार्टिकल, स्टोन पार्टिकल, they just like the rubbish, that it is non-living in state, neutral in activity, passive in state, that it is crystalline in form, that solid in state, and cytoplasm, nucleus और cell membrane नहीं होता इसमें. इस कदर क्या है, they are non-living in state. इनको कहा जाता है their life sometimes is non-living, their life is sometimes living. अब किस स्टेट में ये लिविंग होंगे, ये तो इस वजूहत पे हम कहेंगे दे आर viruses are non-living in state because of these features. And second, we can say how they are living in state. Living in state किस कदर से हम कहेंगे, पहले when they are inside the host, शाबाश, they are inside host body. यहाँ outside they are non-living, outside host इनके ये फीचर्स होंगे. इनसाइड होस्ट क्या होंगे इनके फीचर्स, इनसाइड होस्ट दे आर लिविंग इन स्टेट. नंबर 1, कैसे, दे स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन रिप्रोडक्शन, दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, और when they start reproducing in the host cell, inside जब भी ये वायरस एंटर हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, इसका पहला ही काम रहता है रिप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, नंबर ऑफ कॉपीज बनाना. दैट मीन्स इट गोस रिप्रोडक्शन स्टेट, दैट मीन it starts to multiply, multiplication inside the host cell. उसी का जेनेटिक मटेरियल यूज्ड अप द होस्ट शाबाश सेल्स जेनेटिक मटेरियल, अंदर आके ये शैतानी का काम करता है, तो ये उसी का जेनेटिक मटेरियल यूटिलाइज करके अपने फोटोकॉपीज बनाता है चोरी. तो सेकंड, और बॉडी होस्ट की जो सेल होती है, होस्ट सेल मीन एनिमल सेल या प्लांट सेल या ह्यूमन सेल, उसको भी पता नहीं चलता है मैं अजनबी सेल को, अजनबी एक ऑर्गेनिज्म को फोटोकॉपी कराता हूं, तो चकमा दे देते हमारे बॉडी सेल को. तो नंबर सेकंड, लिविंग इन स्टेट में क्या है, देन ऑल्सो वी कैन से इट स्टार्ट्स रिप्लिकेशन, मतलब स्टार्ट रिप्रोडक्शन, इस कदर क्या है ये लिविंग इन स्टेट में होते हैं. एंड ऑल्सो वी कैन से इट कॉजेज द इन्फेक्शन in host, inside the host it causes the infection, that means it shows the life activity. इस कारण से भी हम कहेंगे वायरस जो है वो लिविंग इन स्टेट में है. इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं इस नॉन लिविंग में कि यहाँ पे वन मोर पॉइंट आई वांट, इनमें अगर हम देखेंगे अदर लाइफ प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन नहीं होता है इनमें, या हम कहेंगे एक्सक्रीशन नहीं होता है, एक्सक्रीशन नहीं होता, ये लाइफ एक्टिविटीज इनमें नहीं होते हैं वायरस. इस कारण से भी हम कहेंगे दे आर नॉन लिविंग इन स्टेटस, दे डोंट शो रेस्पिरेशन, दे डोंट एक्सक्रीट देयर वेस्ट्स.
तो इस कदर इस लिहाज से हम कहेंगे when they start reproducing and causing infection, start their life cycle, and life activity, we can say the viruses are living in state. दोनों non living and living in state. ये था वायरसेस के बारे में. Viruses cause various infections, that is the measles, common cold, flu, mumps, AIDS like sexual diseases caused by viruses. That there are the viral infection, and viral infection are always tough to combat. इनको फाइट करना, एंटीबॉडीज कभी कभार हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज और द बॉडी इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स, वो भी कमजोर कभी कभार पड़ते टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस. वेरियस डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, वी कैन से द एड्स लाइक diseases, hepatitis B, बहुत सारे flu, common cold, cough, they are the virus infections, viral diseases, and there are the vaccine and the process is known vaccination against the virus diseases, and we should be aware of getting the virus diseases as the threat is of the COVID-19 like virus, and it becomes now these days pandemic disease in the global world, and we should follow up all the SOPs in protection ourselves by getting it is infection. तो ये सारा खुलासा था वायरस के बारे में, जनरल डिस्क्रिप्शन था. नोट्स पे भी मैंने मेंशन किया है इसको अलग से कॉन्सेप्ट में, वहां आप पढ़िए उसको. तो यहाँ अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है वेरियस फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के बहुत सारे फॉर्म्स है. वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज द फर्स्ट वन कोकस फॉर्म, दैट इज राउंडेड इन शेप, राउंडेड स्टेट, दैट इज कोकस, COCCS, कोकस फॉर्म, गोल मटोल होते हैं. वायरसेस, bacteria, different forms of bacteria, and then they have also the rod shaped, या हम कहेंगे they are bacillus in state, bacillus form. एक तो ये, दूसरा फॉर्म तो ये, तीसरा जो है स्पाइरल फॉर्म या spirochete in form, spirochete in state. Fourth one is vibrio, vibrio, vibrio form, या हम कहेंगे कामा, जो हम कामा डालते, कामा shaped. There are the 4 different states of bacteria: round state, coccus form, या हम कहते हैं इनको coccus form, rod shaped या bacillus form, spiral form, twisted, spirochete form लिखिए यहाँ, vibrio form, that means comma shaped. तो पहले राउंडेड स्टेट में ये बैक्टीरिया होते हैं गोल मटोल, इनमें ऐसे फॉर्म ही होते हैं. समटाइम्स सिंगल भी होते हैं, समटाइम्स पेयर्स भी होते हैं. इसको हम कहते हैं कोकाई, मोनोकोकाई फॉर्म. मोनो मीन सिंगल, मोनोकोकाई इन फॉर्म अलग अलग होते हैं. या अगर कभी कभार ये 2 होते हैं, दैट इज वी कैन से डिप्लोकोकाई. डिप्लो मीन्स 2, डिप्लोकोकाई इन फॉर्म. या कभी कभार ये ग्रुप्स में होते हैं, गोल मटोल होते हैं मगर दे आर इन ग्रुप्स, कॉलोनियल इन स्टेट, कॉलोनियल इन फॉर्म, दैट इज नोन दैट स्टेफाइलोकोकस इन स्टेट.
और भी इनका स्टेट है, दैट इज व्हेन दे आर फाउंड इन चेन फॉर्म, इन दिस चेन फॉर्म, उस वक्त इनको पड़ता है नाम स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बहुत सारे टाइप्स, ये मैंने बताया, दिस इज द कोकस फॉर्म, दे आर राउंडेड इन स्टेट, कुछ बैक्टीरिया राउंडेड होते हैं, या दे आर फ्रीली, उन वक्त उसको कहते हैं दे आर फ्रीली इन inhabited. Then second is the Diplococcus, monococcus type, Diplococcus type. When they are in groups, they are known as the Staphylococcus. When they are in chain form, they are Streptococcus form. जब ये chain form, they are the various forms of the coccus form. ये इसके बहुत सारे forms गई. Streptococcus, Staphylococcus, then Diplococcus, monococcus. Now second is the some bacteria are the rod shaped, bacillus form, rod shaped, ऐसे rod shaped होते, they are the, we can say them, they can be single in state, as single in state, sometimes they are two in number, then it is known as the bacillus in form, and here is the diplobacillus. They are the single bacillus. They are just known as the bacillus in form, bacillus in state. This is the number A, it is the B. When they are in two pair, then diplobacillus. Then there is the streptobacillus. When they are number of bacteria are in group but are in chain form, they are known as the streptobacillus. And some rod shaped bacteria have the flagella on their body surface. Flagella, they have the flagella on the body. Some bacteria have at the two ends, they have the cilia. They have the cilia. यहाँ पे किसी flagellated, इसको हम कहते हैं flagellated bacillus. ये rod shaped है, but it bears on the body surface flagella. Therefore, it is known as the flagellated bacillus. Cilia at the ends, the rod shaped bacteria have cilia at the ends. Then Streptobacillus, Diplobacillus, इसके भी बहुत सारे सब types है. Then is the another to discuss here. Various forms of bacteria को हम study करते हैं. यहाँ spiral form, spiral form में इस तरह का bacteria होते हैं. They are spiral in state. They are spiral. They are twisted. या spiral को हो, या commonly it is known as twisted in form, twisted form. दूसरा स्पाइरल, ऐसे हम धागा लेंगे, उसको हम एक एंड से ट्विस्ट कर लेंगे, इस तरह हेलिक्स फॉर्म में आ जाता है, ट्विस्टेड इन स्टेट आता है स्पाइरल फॉर्म बैक्टीरिया. दूसरा होता है जिगजैग फॉर्म, ऐसे स्पाइरोकीट उसको हम कहते हैं. दे जस्ट आर zigzag, not twisted, zigzag in state, and they form the here. It is known as the this is known as the spirochete form bacteria. Spirochete form bacteria, and this is the twisted spiral सिक्रिव. आपको पता होगा जो सिक्रिव फॉर्म में होता है स्पाइरल ट्विस्टेड. Then is the vibro comma shaped comma form bacteria. There are the various forms bacteria comma. ये आप बुक पे उतारे, नोटबुक पे नोट करें इनको. शायद मैंने नोट पे नहीं बताया है, इसको मेंशन नहीं किया है. विब्रो ये कामा फॉर्म में होता है. विब्रो कामा फॉर्म. They have the flagella, short stunted flagella, कामा in shape. ऐसे बनाता हूं दूसरा. They are the vibrio forms. That means जब भी हम कामा डालते हैं ऐसे punctuation mark कामा,
and therefore they have the comma shaped. It is the vibrio form of the bacteria, and they are the comma shaped. You can see that A form. जिस तरह एक बैक्टीरिया का नाम बताता हूँ, विब्रो कॉलेरा, वो भी which causes the disease cholera, vibrio cholera, vibrio cholera. That it is organism. They have the comma shaped bacteria which cause the cholera like disease. Dear students, it is all about the concept of virus and various status of bacteria. They comes of different status: coccus form, bacillus form, spiral form, spirochete form, vibrio in form. I hope you understand about these topics. Thank you.